शर्म औरत का गहना होती है। बचपन से हमें कंडीशन किया गया है, हमें एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। ऐसे करना अलाउड है और ऐसे करना अलाउड नहीं है। गिव लव, गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, नेवर आस्क फॉर इट। मिल जाए तो एहसान मानो, डोंट क्वेश्चन, जस्ट फॉलो द रूल्स। जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही करो। तन मन धन से समर्पित हो जाओ अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पति के लिए, समाज के लिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। Being a responsible mother, responsible daughter-in-law or responsible wife, I just lost my authentic self. I lost my identity. I was at the peak of my identity crisis. My heart used to scream every time. I'm not good enough. Recently, WHO has declared that India is the most depressed country. It's very sad. We all are living a sad life. When I say sad, full of stress, anxiety, or depression. Nearly 700 deaths are reported due to this daily. This is the latest research that I have, statistics that I have found. According to another declaration by WHO, women are 3 times more prone and susceptible to mental health disorders. Do you know the reason behind it? Anyone, any guesses? Yes, indeed, we are from a developing country. It's not yet developed yet, so we have a lot of problems in our lives. Relationship problems, work problems, money problems, और मे बी गवर्नमेंट के लॉज अच्छे नहीं है शायद, या फिर मे बी द प्रॉब्लम इज गॉड ओनली, या मेरी किस्मत खराब है या मेरा भाग्य खराब है। उनसे जब हम पैदा होते हैं हमें एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। ऐसे करना अलाउड है और ऐसे करना अलाउड नहीं है। स्पेशली अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, जो हमारी जनरेशन की गर्ल्स थी, उनकी स्क्रिप्ट में 5 मेजर की पॉइंट्स उनको दिए जाते थे, which I call as 5S, right? So first is sacrifice. औरत त्याग की देवी होती है। Second is shame, right? शर्म औरत का गहना होती है। बचपन से हमें कंडीशन किया गया है। Number 3S is servility. Just serve, give love, give respect to others, never ask for it. मिल जाए तो एहसान मानो। Number 4 is subservience. Don't question, just follow the rules. जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही करो। And the number 5S is surrender. तन मन धन से समर्पित हो जाओ अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पति के लिए, समाज के लिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर एक लड़की ये सारा स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से फॉलो कर लेती है तो समाज उसको एक कैटेगरी में फिट करता है, गुड गर्ल्स कैटेगरी, गुड वाइफ्स कैटेगरी, गुड मदर्स। अनफॉर्चुनेटली, इफ अ वुमन who is unable to follow these rules, she is labeled through different categories. बदतमीज है, बेशरम है, बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत एटीट्यूड है, राइट? अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब बचपन से उस लड़की को बहुत लंबे टाइम तक कंडीशन किया जाता है उस माहौल में, rather I would say ब्रेन वॉश किया जाता है, so she just become, 2 ही ऑप्शंस बचते हैं उसके पास, या तो वो साइलेंट स्लेव बन जाती है या फिर वो बन जाती है एक मॉन्स्टर रिबेल, राइट? 2 ही ऑप्शंस होते हैं उसके पास। बट मेजॉरिटी ऑफ जो लड़कियां होती हैं वो साइलेंट स्लेव बन के रह जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर रिबेल बनने की को बनना उन्हें अलाउड ही नहीं होता है, राइट? इवेंचुअली जब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है, नंबर 1 फियर।
They start living in fear. Entire life they live in fear. Fear of rejection, fear of failure, fear of abandonment, fear of loneliness, or maybe fear of abuse. इंडिया में तो डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है. नंबर 2 रिजल्ट जो होता है दैट इज गिल्ट. So every time, every point in her life, a girl or a woman stays in guilt. आप करके देखिए, जितनी भी वुमेन बैठी हुई हैं, आप करके देखिए, एक चीज के लिए आप खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपने बच्चे को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट करके सबसे पहला थॉट आपके माइंड में यही आएगा, आई एम नॉट अ गुड मॉम. नंबर 3 is overwhelm. She gets disconnected with themselves, with herself. कुछ समझ नहीं आता क्या करना है. Life is full of confusion. अपने ही इमोशंस एंड फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं वो. उसकी वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ वर्थ तो आप पूछिए मत, धज्जियां उड़ जाती हैं. जैसा कि मैम ने कहा कि अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बचती है. पूरी लाइफ वो आइडेंटिटी क्राइसिस से ही जूझती रहती है. और ये होता है मिडिल एज में आते आते. और या फिर होते हैं एंगर आउटबर्स्ट, जिनका शिकार बनते हैं हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मासूम बच्चे, क्योंकि और किसी पे तो आप चिल्ला नहीं सकते. चौथा जो होता है रिजल्ट, दैट इज द मोस्ट डेंजरस वन, साइकोसोमैटिक डिसीजेस. जो वो डिसीजेस जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होते हैं ड्यू टू अवर पुअर मेंटल हेल्थ. व्हेन आई से मोस्ट डेंजरस, द रीजन इज बिकॉज वो धीरे धीरे जब हम अपने इमोशंस को लंबे टाइम तक सप्रेस करते जाते हैं हमारी बॉडी में, दे मैनिफेस्ट एज डिसीजेस लाइक migraines, gastrointestinal diseases, like thyroid disorders, hormonal imbalances. PCOD is very common nowadays. Thyroid and PCOD is very common, and even cancer. So these are called psychosomatic diseases. I'm sure आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक ना एक प्रॉब्लम तो शायद किसी को होगी इसमें से. मुझे भी थी, अभी भी है. So ये 4 रिजल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से धीरे 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 a woman enters into a dark hole of depression and no one is there to help her. अब क्या करें, किसी से शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं. So whatever I have discussed up until now, this is the story of every other typical Indian woman. This is my story and probably this is your story. Because already यहाँ 2 लोग share कर चुके हैं almost similar story. So now I trust that this is the story of every other woman. So in a very few lines, I'll share my story with all of you, that why am I standing here and who am I to give this talk on this topic. How I earned this designation. Being a homemaker for 13 years, very timid and shy girl. I was born into a very small town, middle class family and in a very orthodox environment. And I had a traumatic childhood as my father was very toxic. Getting married at an early age of 20, becoming a mother of 2 till 30. Staying in a joint family, and that too without husband. Why? Because my husband is in merchant navy, so he doesn't stay much with us. I playing different roles, being a responsible mother, responsible daughter-in-law, or responsible wife. I just lost my authentic self. I lost my identity completely. I was at the peak of my identity crisis. My heart used to scream every time, where are you, Priyanka? Who are you? This was the question जो मेरी आत्मा को झंझोड़ के रख देता था. And one day, because जब मैं इस डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, I was suffering through many of the psychosomatic diseases that I have shared just now. I started helping myself.
One day while crying, I just looked into the eyes of my two beautiful daughters and I asked this question to myself, कर क्या रही हो ये तुम? क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो तुम अपनी बेटियों के लिए? क्या लेगेसी छोड़ के जाने वाली हो तुम उनके लिए? You see, your mother is a failure. She's suffering in silence, unable to share her pains with anyone. And if she does, no one is able to understand. So that day, I took a decision and it became a turning point in my life that no, ये मुझे life नहीं चाहिए. I will now rewrite my destiny. I will create my desired future. So I started working on myself, read a lot of self-help books, meditated, did many courses. In the last 2 years of my journey, I gained more than 35 certifications. But while doing this, the ultimate solution that I could figure out to solve, to change my life, that transformed my life, was self-love. So today, in quick 5 steps, I'll give you this pill that if you follow these 5 steps in your life, it will completely transform your life in next 6 months. Trust me, because I have done it. I've done it with my hundreds of women clients. So I'm damn sure that you will also help yourself if you do so. In order to please others, यही हम अपने लाइफ का पर्पस बना लेते हैं क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, सो वी गेट डिस्कनेक्टेड विद आवर ट्रू सेल्व्स. सो स्टार्ट योर सेल्फ लव जर्नी बाय आस्किंग these few questions. Who am I? Why am I here on this earth? Why am I doing what am I doing right now? What are my needs? What are my values? What do I want from my life? This, ladies and gentlemen, this is the first step of self-love, that is called self-awareness. Just connect to yourself, अपने साथ समय बिताओ. That's the only thing. Number 2 step is self-acceptance. Once you are aware about yourself, that exactly who truly you are, just accept yourself with wholeheartedly with love and compassion. This is authentic you. No more masking. बहुत कर लिया. छोड़ दो इसको अब. Number 3 step is self-forgiveness. माफ कर दो अपने आप को. प्लीज माफ कर दो. आपने अपनी सोल को, अपनी बॉडी को बहुत हर्ट पहुंचाया है. Please, always before going to bed, every day stand in front of the mirror and say these 4 sentences to yourself. Please forgive me. I'm sorry. I love you. Thank you. Please do this and see the magic that how you change your life in next 1 month. Be grateful for what you have already. Use your powers. Number 4 is self-care. Start prioritizing yourself. Take out the time for yourself. Guilt आंटी को धक्का मार के निकाल दो अपनी लाइफ से. मैं सबको यही कहती हूँ. Right? Create your own rituals and routines. Don't wait for others. रिलीजन ने हमें सिखाया है कि इस देवी की पूजा करो, उस देवता की पूजा करो. Just start worshipping the goddess within you. Then you can change your life. And once you are happy, you can keep others happy too. And the last one is self-growth. कहते हैं जिस पल हम बढ़ नहीं रहे हैं, उस पल हम सड़ रहे हैं. So stagnant water always stink. So always, my suggestion is always keep on investing your time, energy and your money towards your growth. No matter how many hurdles you face in your life, no matter. Just constantly keep on working yourself and create your desired future and rewrite your destiny. We all have that power within. Trust me, we all have. आज से 5 साल पहले I was lying on bed, being a homemaker, being a failed mother, failed wife. But now I'm standing here in front of many people and talking
topic. वैसे trust me, it is my first speech, so thank you for bearing me. And thank you so much. Thank you so much for making me so comfortable. I'm on a mission that I want to help every Indian woman. Every Indian, when I say Indian, I mean Indian. Every Indian woman to heal through self-love so that they can transform their life and rewire and realign themselves with growth mindset and live their life with true potential, true joy and happiness and abundance. वो ऊपर ऊपर वाला फेक स्माइल नहीं कि हाय हेलो हाँ नहीं, अंदर से आना चाहिए वो ट्रू जॉय. So that's my mission, and I have helped more than hundreds of women in my last 2-year journey when I started professionally through my one-to-one coaching sessions and my workshops. So now I have a vision that every Indian woman change their script from 5 S's to 7 A's. First A is they become aware about themselves. Second A is they become authentic. Third A is they become aligned to themselves. And the fourth A is they acknowledge their powers, true hidden powers. And the fifth A is they affirm their success. They become action oriented. And the last A is they become abundant so that they live their happy life, true life, in every dimension of their life, right? So that's my vision, and with this I end here. I give a pause to my words with my last message that live life like a true queen. If you follow these 5 steps, I'm sure that you will awaken the true love queen within you. Just live like a self-love queen. जो आजकल लोग मुझे, जब से मैंने बुक लॉन्च की है, लोग मुझे self-love queen का नाम देने लगे हैं. So, and I truly believe that I deserve this designation. So, thank you so much. Take your own sword, fight your own battles. No one else is coming. Take 100% responsibility of your life. Because कोई नहीं आके कहने वाला कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. It's only you that you have to take that one decision. Thank you so much.